most beneficent, merciful, and the sustainer of all. Esteemed Program Coordinator Dr. Mansoor, esteemed participants and friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a blissful morning to all of you. I, Dr. Asfa Wali, welcome heartily to all of you to this fourth day MSME sponsored training program on scientific management in Rainbow Trout Culture for entrepreneurship and development generation. So, for this day, we will start with a presentation which will be delivered by Dr. Ishrat Mohammad. She is the alumni of this college and she has always bring laurels to this college. She is the topper in BFSC, MFSC, and she has done her PhD from this college only. And she is recently the assistant professor in General Degree College, Jammu and Kashmir. She has ranked on first and bring laurels and rewards to this college. I heartily welcome my sister, my friend, Dr. Ishrat Mohammad, for her talk. Thank you, everybody. I just introduced me, but I want my own introduction that I'm Ishrat Mohammad, the lecturer of this faculty. I'm very thankful to all of you, the MSME training program, especially Dr. Mansoor sir, for having me here. I'm privileged and proud. It's a proud moment for me that I'm giving the lecture in front of you. I hope you will cooperate with me, and in fact, I hope this will be a good talk today. So, without wasting time, I'm starting my lecture. That will be on the breeding biology of the trouts. So, when we talk about the trouts, the first thing that comes in the mind is that it's a cold water fish. Yes? The cold water fish. What do you mean by the cold water fish? The cold water fish. Now, what is cold water fish? Do you know? It's actually the fish that adapts itself in a very low temperatures. And by low temperatures, we mean the temperature about below 10 to 20 degrees Celsius. The fishes that are found in a very low water temperatures. Now, the question is where such fisheries exist. The fisheries are found to be in very high upper reaches, the high altitude lakes, which we know as the upland waters. And not only this, we also find these fisheries in the cold and in the low altitude lakes also. Can you tell me where? What is the source of the water in the plain area where we find the cold water fisheries? Yes? Where the source of water is actually the springs. There's also the cold water fisheries found in the plain area, but the source of water is spring. Can you tell me why? Because the springs are more colder than any other water body, right? Now, such water bodies where the cold water fisheries actually exist, जहाँ पे cold water fisheries होती है, और किन water bodies पे usually होती है, that is they are found in the hill streams mostly. Rapids, pools, lakes, reservoirs, and they are abundantly found in India where such fisheries are where found. हम कहाँ पे देखते हैं ऐसी fisheries को? And usually it's very good that it's found in the Himalayan region. And not only in the Himalayan region, but in India, it also exists in the Deccan Plateau. ठीक है? अब आपने देखा cold water fisheries क्या होती है? First, we talked about the temperature. ये एक low temperature range पे adapt कर लेती है खुद को. दूसरी चीज, ये higher upper reaches पे ऐसी fisheries हम देखते हैं. Third, we say that these fisheries occur in the water bodies mainly in hill stream. Can you tell me what is hill stream? Yes, also. No, what's hill stream? It's nothing, but it's just a river, the high-speed river. ठीक है, but जो एक high mountain regions पे usually होता है, there is a turbulent water in narrow channels
अपर रीच पे, एंड जब ये प्लेन्स पे चलता है तो वाटर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। Now we talked about cold water fisheries. Now we talk अब इसका सोर्स कहाँ से आता है हमारे पास? The source of the water is mainly what? Glacier melting और springs होते हैं इसके। Mostly ये जो glacier melting है, springs है, ये main source of water होता है northern India का, Himalayans, ठीक है। और but Deccan Plateau में usually हम glacier melting नहीं देखते हैं। The source of water, the supply of water is actually the rain water, not the spring water, but it's the rain water. Now I just want to grab your attention in this slide that you know how much Himalaya cover the geographical area. Do you know? Actually, it's almost when you see the map, it actually covers 1/3 of the total whole geographical area of the India. Now imagine how much waters would be there, the cold water. I personally feel very concerned about this fact that we have the ample water resource and still, in spite of that, we are producing nothing from the cold waters. Our production is negligible. And I believe that it's just, we need to wake up from all this. We need to wake up, it's a high time, we need to think that we need to develop cold water fisheries. I believe if we develop it properly, if we manage these water bodies, there will be a one day that we will be the major contributors, not only in India, but at the global level. Today, we are not producing more than 1%. Our contribution is hardly 1%. But because of management, culture, proper techniques, we all people that belongs to the fisheries, we teachers, the students here, the people who want to invest in the fisheries, if we come together, I think we can bridge this gap, we can make a difference. Now I told you that we have the ample resources, and to utilize such resources, we have introduced certain economically viable species which we include, and the most important them are the carps and the trouts. It's not our indigenous, both are not our indigenous fishes, they are exotic ones, but very economically viable and cultivated here. Well, I have just characterized the cold water fisheries here. It's just that they are the common features of the cold water fishes. They are the streamlined body इनकी होती है. Their mouth is mostly modified. इनका mouth usually they have the sucker type of mouth. Not only in the mouth we found the suckers, but actually अगर आप hill stream fish देखते हो, उसके हर body part पे एक sucking devices होता है. और उनके यूजुअली नैरो गिल्स होते हैं. आप बता सकते हो ऐसे फीचर्स क्यों होते कोल्ड वाटर फिशेस में? Yes, definitely. Because the fish lives in the water which is not very congenial. वो suitable नहीं है. It has to adapt in such a very fast water currents. In order to combat with that, to cope up with that, इसने क्या बनाया है? To combat with the fast water current, इसने अपनी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई है. और तो इसने क्या सकिंग डिवाइसेस हम देखते हैं ताकि वो एडहियर हो जाए पत्थरों पे, छोटे छोटे पेबल्स पे, ताकि वो वॉश अवे ना हो पानी के साथ. थर्ड थिंग, देयर इज अ नैरो गिल ओपनिंग, एंड ये ऐसा क्यों है? बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल इज it's highly saturated oxygen. There is no need of a efficient gills to be there, right? Now, the cold water fishes that are found mostly in India, as far as culture is concerned, अगर exotic की बात करेंगे तो the most important is the trout. अगर trout है, यहाँ पे कौन सी trout है? Brown and rainbow trout. और indigenous की बात करेंगे तो हम अपनी native fish, that is a schizothorax, और दूसरी fish मासी जो इस वक्त हमें कश्मीर में नहीं मिलती है, but it's found in the Jammu region, the very important game fish, जो कि हम कल्चर कर सकते हैं. Now the brown trout, this fish actually is not a native of India, it's a native of the Europe. This fish is a bottom feeder, potamotromous, but not very much good in growth rate. इसको constant supply of cold, clear, oxygenated water चाहिए. That's why it's not much cultivated here as compared to the rainbow trouts.
Rainbow trout, the very beautiful fish. अब इस फिश का क्या है, ये नेटिव ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये सरफेस फीडर है, ये बहुत मोस्टली कल्टिवेटेड हाईली वैल्यूएबल स्पीशीज है, इसकी हाई ग्रोथ रेट है। इसका मोस्टली जो ब्रीडिंग सीजन है जनवरी टू मई, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ, बट इट्स अ कॉमन दैट इज ब्रीडिंग सीजन फॉल्स इन दीज मंथ्स। नाउ देयर इज अ शाइजोथेरेक्स जो हमारी अपनी मछली है, देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ दिस जीनस, we can culture, हम कल्चर करते हैं कुछ स्पीशीज को यहाँ, then there is a Mansoor which also have a cultivable value. Now we will talk about the rainbow trouts. As I told you that it's a cold water fish, जो कि इस fish का feeding habit क्या है, that is a carnivorous species and it needs clear crystal oxygenated water. Now कश्मीर में क्या, इंडिया में क्या potential है इसका? It's a great potential because it's of high demand, not only in the national but at the international markets as well. India में कहाँ पे mostly एक common culture होती है, and the states are like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। क्यों होता है ऐसे? वहाँ पे क्यों है? Because there is a suitable temperature जो है वहाँ वो available है, and the temperature mostly जो वहाँ पे है that's 5 to 18 degrees Celsius. Not only the temperature but the supply of the water, the source of the water जो होना चाहिए वो इन states में है, और इन states में ऐसा भी देखा गया that the infrastructure facility to grow the to a culture rainbow trouts वहाँ पे ऐसी चीजें हैं। Now let's see the main producing countries of the rainbow trouts is actually the Europe, North America, Chile, Japan, Australia. In states of world level इनमें ये देखा जाता है that they are the highly producing countries of the rainbow trouts. Now let's talk about habitat and its biology. अगर हम रेनबो ट्राउट की बात करेंगे तो that it's a hardy fish. Hardy in the sense that it can adapt in a wide range of environmental conditions. ठीक है? It's a very fast growing fish. अब और बहुत सबसे बड़ी बात जो रेनबो ट्राउट, हम यहाँ खाली रेनबो ट्राउट क्यों ही कल्चर करते हैं तो as compared to the brown trouts. Because हाँ अजीज ने ठीक कहा that it is able for a rainbow trout क्या करती है, यही एक डिफरेंस है, ये easily artificial diet लेती है compared to the brown trout, ठीक है? ये एक चीज है, but there are many ये fish एक tolerable temperature, एक wide range of temperature को tolerate करती है compared to the brown trouts. इसकी ब्रीडिंग, इसकी फर्टिलाइजेशन, फी क्वांटिटी रेनबो की ज़्यादा है compared to the brown trout. That's why we go more with the culture for rainbow trout than the brown trouts. और यूजुअली हम क्या, इस फिश का क्या है कि ये 3 साल में मोस्टली 4-5 किलो तक हो जाती है, और ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब टॉलरेट करती है, नियरली फ्रॉम 0 to 27 डिग्री ऑफ टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकती है। बट फॉर स्पानिंग एक नैरो रेंज होता है इसका 9 to 14 डिग्री सेल्सियस। द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसका जरूरत होता है दैट्स 21 डिग्री सेल्सियस। फीमेल यूजुअली जब फीकेंडिटी इसकी होती है दैट इज अबाउट 1500 to 2000, और यूजुअली ये जो स्पान करती है दैट्स इन जनवरी फेब मंथ, लेट इन द विंटर मंथ्स मोस्टली। Now biological features of the rainbow trout. I have put this slide. इसमें क्या है कि morphological meristic parameters है, that's not important for you. The most important thing that जो है that is coloration. अब इस fish की क्या coloration है, that the fish is blue to olive green in color, और इसमें क्या लगे होते हैं, जो sides पे lateral sides पे strips लगे होते हैं, pink strips, ठीक है, जिनको हम iridescence भी बोलते हैं, और we call them as a, that's why we call this a rainbow colored fish, ठीक है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी बॉडी पे हर जगह स्पॉट्स लगे होते हैं, स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, फिन्स, कॉर्डल फिन, हर जगह। जो ब्राउन ट्राउट है उसमें स्पॉट्स लगे, बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट्स ऑल ऑन द बैक रीजन ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। Now let's see the potential of this trout in Kashmir. As I told you that we are blessed to have a very ample natural water resource, and
this makes it that this potential of the cold water fisheries in Kashmir. Already we are practicing trout farming in the states, in the places like Dachigam, Dara, Harwan, Ganderbal, Anantnag and the Avantipura. अब trout culture के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत है? First thing that is needed in the trout culture. Water. कैसा water होना चाहिए? Pure water मतलब that there should be no sedimentation load in it. Second thing that is important is the temperature. ठीक है? First pure water, temperature. और दोनों चीजें कश्मीर में present है. The pure water and the temperature present. That's why we find this fish a very potential fish in Kashmir. ठीक है? Now trout farming हम देख ही सकते हैं कि we can raise it in the hill streams, rivers, even in the well-managed lakes, raceways. And I think our Kashmir is quite capable of doing that because I will tell you that I have provided data that will make you understand how much abundant we are in water resources. We have a total of 2,781 kilometers of rivers and canals. We have about 7 lakh hectares of reservoirs and 17,000 hectares of tanks delving to water bodies. As per the estimate, there are roughly 157 square kilometers of lakes and streams in the Kashmir region. See how much we are abundant with these water resources, how far we can go with the cold water fisheries. Now these are the different water bodies in Kashmir. The water here is pristine, clear, a low temperature, quite suitable to grow our cold water fisheries. Now let's see the reproductive biology of the fish. That's our main topic. जब भी हम breeding की बात करते हैं fish की, first thing that हमें पढ़ना होता है, that is जो देखना होता है किसी farmer को, जो breeder को, that is the sexual dimorphism. अब sexual dimorphism क्या होता है? Yes, Udisa? ऐसे कैरेक्टर्स जिससे हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं विदाउट सीइंग इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एक्सटर्नली वी कैन रिकॉग्नाइज दैट इज अ मेल एंड अ फीमेल. ठीक है? अब हर स्पीशीज का अलग अलग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राउट्स की. यूजुअली ये ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, जो मेल होता है उसके जो लोअर शा होता है that look like a hook beak shape होती है उसके, हम और इसको रिकॉग्नाइज करते हैं that is a male, और ऐसा फीमेल में नहीं होता है. और जो इसके जेनेटिक पैटर्न होता है that it's fully prominent and tribal. और जो बॉडी कलरेशन यूजुअली इन ऑल फिशेस, नॉट ओनली इन ट्राउट्स, वो ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं कंपेयर टू द फीमेल्स. ठीक है? अब ये पिक्चर है, आप यू कैन गेट द आइडिया. The above picture, there's a male trout. आप देख सकते हैं hooked beak shape in males. And in the female, it's not like that, huh? Clear? Now we will talk about the age and sexual maturity. ये भी important है breeding के लिए. Male जो होती है वो mature कम age में होती है. It takes about 2 to 4 years to mature, but female usually 3 to 4 years लेती है mature होने के लिए. And spawning season, well, I've told you that it may vary. It may vary with the geographical area, right? Because the different geographical area have the different temperatures, and the temperature जहाँ पे different होगा तो आप मानिए आपका season, spawning season भी different होगा. ठीक है? Now the common data I've provided is that in rainbow trout the spawning season, I'm not talking about the Jammu and Kashmir, it's January to May, and brown trout is October to January. But I expect this question from my students. Can they answer? What is the breeding season of rainbow trout and brown trout in Kashmir? September. For brown trout, Lal? December to March. Rainbow trout December to March. हाँ, उसका brown का? It's October to December almost. उसके बाद रेनबो का स्टार्ट होता है जनरली जनवरी फरवरी. ठीक है?
एंड फीकेंडिटी जो इसकी देखते हैं हम, फीकेंडिटी आपको क्या, फीकेंडिटी बाय फीकेंडिटी वी मीन द नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, एग्स कितने देती है, जो कि आगे जाके हमारा स्पर्म, मतलब आगे जाके इन फ्यूचर दैट विल बिकम एन अडल्ट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ ब्रीडर कितने एग्स देती है. एंड द रेनबो ट्राउट नॉर्मली गिव्स अबाउट 1500 to 2000 number of eggs, right? Now coming to the topic seed supply. अब हम seed supply, seed produce कैसे करते हैं trout के? I've divided it in 3 components. First, it's a development. We need to take care of we need to develop a brood stock. दूसरी चीज क्या important है? That is stripping and fertilization. And the third thing that is hatchery production. तीनों चीज बहुत important है अगर हमें seed निकालना है किसका? Rainbow trout fish का. And I will discuss these things one by one. हाँ? Now the brood stock. अब brood stock क्या होता है? What is a brood stock? Brood stock is nothing but a very mature fish, sexually mature fish. अब हम रेनबो ट्राउट को क्या करते हैं? We don't expect the fish जो जनरली हम कॉमन कार्प में को देखते हैं पॉन्ड में, ये सीधे उसको डाला और वो नेचुरली ब्रीड करती है. बट रेनबो ट्राउट में ऐसा कुछ नहीं होता है. We need to do the artificial spawning, ठीक है? The second thing that is important in the brood stock management, that we need to take care of the sex ratio, and it's usually 2:1, but the satisfactory one is that we have to take 3 males and 1 female, ठीक है? We need to take a breeding pair जिसमें हमें 3 females या 2 females रखने हैं and 1 male, ठीक? दूसरी चीज हमें कितना brood stock रखना है, it depends on how much fry fingerling we need to produce, ठीक है? कितना हमारा प्रोडक्शन सप्लाई है उस पर डिपेंड होता है, एंड हाउ मच मोर्टेलिटी इज इन इट वो भी हम कंसीडर करते हैं, उस हिसाब से हम ब्रूड स्टॉक यूनिट रखते हैं. एंड द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ climatic condition, water source, the water quality should be definitely, it should be good. And the following water quality parameters needs to be maintained. I have mentioned here that dissolved oxygen, it should be near to the saturation, mostly greater than 9 we follow it. Temperature kam hona chahiye, there should be a good transparency, and of all these data should need to be maintained and controlled. For feeding, we usually do what we do that we, as fishes are carnivorous, हम क्या देते हैं उसको meat balls of the fishes and ratio 1:1, and हम किस percentage में देते हैं? We give it to the 1 to 2% of its body weight, right? Now stripping. दूसरी चीज, अब हमने brood stock तैयार किया, अब क्या करना है? उस brood stock से हमें हमारे अपने eggs milk निकालना है. By milk we mean the sperm simply. उसको ब्रूड स्टॉक से हमें मिल्क निकालना है. We call this technique as a stripping, ठीक? Stripping means we are removing the eggs or a milk from the female and the male fish respectively. क्या करते हैं हम? जब एक तैयार होती है, it's ready to spawn, हम उनको निकालते हैं टैंक से and we gently press it, and we press it from the hands, vent region से press करते हैं. From the pelvic fin up to the vent region. And normally हम क्या anesthetize करते हैं fish को, so इसको stress ना आए. And after that we place the eggs and the milk in their respective bowls. We mix them with normally with a feather. अब 1 घंटे 45 मिनट से हो जाते हैं कि वो उनकी fertilization start होती है, ठीक है? अब हम फर्टिलाइज्ड एग्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? दैट यूजुअली दे टेक ए ग्रीनिश कलर, एंड जो अनफर्टिलाइज्ड वन होते हैं दैट आर वाइट इन कलर. और हम टाइम टू टाइम इनको रिमूव करते हैं, क्योंकि हम इनको इसलिए रिमूव करते हैं, इट विल, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन, इसलिए हमें ये टाइम टू टाइम निकालना चाहिए. नाउ आफ्टर हमारे पास अब फर्टिलाइज्ड एग, हमने ब्रूड स्टॉक तैयार किया, उनसे एग्स निकाले. नाउ वी हैव विद अस द फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक? अब फर्टिलाइज्ड एग्स को क्या करना है? सिंपली वी हैव टू गो इंक्यूबेट एंड हैच देम, ठीक? अब इंक्यूबेशन यूनिट में हमें 3 चीजें हैं. वी हैव विद फ्लैटिंग ट्रफ सेंट्रीज, हम यूजुअली जो कश्मीर में यूज करते हैं, दैट आर फ्लैट ट्रफ सेंट्रीज. Alternatively, we can also use vertical flow incubators, jar incubators, ये सब यूज किया जाता है for incubation, ठीक है? The most important thing is that in rainbow trouts we maintain the water flow rate.
जो नॉर्मली 0.2 to 0.3 लीटर्स पर मिनट होती है पर 1000 eggs के लिए हमें कंटिन्यूस वाटर फ्लो की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर should be mostly 10 to 14 degrees Celsius at that time. This is a flat trough and tray जो usually mesh trays होते हैं and there may be a different number of trays जो हम trough में रखते हैं. It's made of a perforated stainless steel. They come in a different dimensions like short troughs, long troughs, and it has been found that a tray of 50 to into 50 dimensions can carry about 10,000 eggs. And this is a picture showing tray and trough where we are just waiting for the eggs to hatch, and after then placing them in the tanks, the fry fingering stage. And then alternatively, we can use the vertical flow incubators. It's in, I think you might understood that in vertical incubators, we are placing trays one over others, like stacking. And here we place water over the top, जो कि नीचे से pass down होता है, वो नीचे वाली tray तक होता है. अब इससे क्या फायदा आता है? Can you tell me? Space बच जाती है, पानी बच जाता है, and third thing, the most important, that इसकी naturally aeration हो जाती है from अगर ये ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, ठीक है? This is a picture. Now alternatively we can also use the jar incubators. Now the development of eggs. जब fertilized egg होता है तो we normally मैंने आपसे कहा that we call them as a green egg. And after that there comes a stage, that eyed stage. Eyed stage ऐसी होती है कि embryo develop हो जाता है उस stage में. Or after that there is an element or a sac fry stage, and the sac fry stage is that when its yolk sac is present, it's still dependent on the here it doesn't depend on the weaning at that time. ये artificial diet नहीं लेती है, but still rely on the yolk sac. उसके और इस stage में ये still जो bottom पे present होती है ये move नहीं करती है. At what stage? Sac fry stage. Swim up fry stage वो advanced stage होती है. It swims and starts taking the external feeding. ठीक है? Normally incubation period, actually incubation period क्या होता है? It depends upon the temperature. जितना ज़्यादा temperature होगा, उतना कम time लगेगा. And normally जो 72 to 90 days हम देखते हैं rainbow trout में लगते हैं. जो incubation period rainbow trout का होता है that is 70 to 90 days और brown trout का होता है 40 to 60 days, but temperature is important and the temperature is very low, 3 to 7 degrees Celsius पे इतना time लगता है, but अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो कम time लग सकता है, ठीक? Now there after that हमारे पास egg stage खत्म हुआ, there is a larval rearing. Elements eggs fry हम trough trays में ही culture करते हैं 30 to 45 days तक, जिसकी हम स्टॉकिंग डेंसिटी 10,000 तक रखते हैं. आर्टिफिशियल फीड देते हैं, देन आफ्टर ट्राउट फिंगरलिंग हम उनको टैंक्स में रेयर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months. Now I just put a slide here, a comprehensive slide to make you understand how we can obtain the seed from the trouts. It's for the first picture we are just squeezing the eggs from the female, stripping done in female. उसके बाद हमने eggs collect किए एक पैन में, ठीक है? उसके बाद हम milk means sperms from the male fish. We are collecting it in a bowl जो कि आपको white दिख रहा है नीचे. उसके बाद उनको mix किया जाता है milk और eggs को. उसके बाद the mixture को हम ऐसे ही रखते हैं 1 घंटे तक ताकि वो fertilize हो. उसके बाद then there is a story of incubation. उसके बाद हम उनको incubate करते हैं, water flow maintain करते हैं और at the end we get a sac fry stage, right? Now this is a whole story of the production cycle. How we first हमें क्या होना चाहिए? Brood stock. From the brood stock we select the male and the female fish. From that we get the gametes, and after that we fertilize them, put them in the hatching trays. Then the eyed stage आती है, उसके बाद 11th sac fry stage, and after that we rear them in the different trays phase. Now ये सब होता है, we need to think forward, we need to think about the future strategies. Trout farming तो कश्मीर में होती है, but we need to expand it. There's a need of expansion of trout farming in the potential assessed areas.
And also I believe that GIS mapping is important to just locate such areas where the trout is found in the Himalayan region and just go for their sustainable utilization. And third thing, what is important, that I think in trouts we need to develop cost-effective feeds. जितना हमारे पास अच्छा feed होगा, उतनी हमारे पास fishes ज़्यादा अच्छी बनेगी. And also the important point is that we need to take care of the disease surveillance and the health management also. And we need also to explore some genetic improvement should be done in the rainbow trout, like selective breeding, ताकि हम explore कर सके fast growing species for the future important. I just thank you. Extract and fertilize it. We take 3-4 fishes का लेते हैं that can fertilize an abundant number of eggs. क्योंकि एक मिल्क में millions of eggs, 3 million, 4 million, it varies. आप इमेजिन कर सकते हो उतने एग्स मिल्क अगर 1 ml का भी होगा वो कितना फर्टिलाइज कर सकता है. All occurs in all species. Mostly जो spermatogenesis होती है that it depends upon something related to the reproductive activity of the fish. It not happens only in the trout, but actually जो reproductive hormones होते हैं वो उनके कम टाइम लगता है as compared to the female, because the female are more gravid, उनके पास अलग cyclicity होती है वो मतलब ना रिप्रोडक्शन की उसका ऑलरेडी जब वो हम उसको ब्रीड कराते हैं वो तैयार होती है मेल ऊज आउट होता है वो सब. कुछ किसी को क्वेश्चन पूछना है? मैम ट्राउट में इंड्यूस ब्रीडिंग क्यों नहीं कर सकते? इंड्यूस ब्रीडिंग वेल इट डिपेंड्स, क्योंकि इंड्यूस ब्रीडिंग कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मैंने बोला हार्डी फिश वी कैन इजीली स्पॉन इट, इसमें ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली वेट फॉर द स्पॉनिंग. ऐसा भी है हम रेनबो ट्राउट ऐसा भी है कि हम ट्राउट को, क्योंकि ट्राउट सीजनल ब्रीडर है, हम थ्रू आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इसको अराउंड स्पॉनिंग भी करा सकते हैं, जस्ट टू बिकॉज ये बहुत कॉस्टली है कि फिश को ब्रीड कराना थ्रू विद मनी. जब ये नेचुरली करती है आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया टू गो फॉर द आर्टिफिशियल मतलब इंजेक्शन यूज करना स्पॉनिंग के लिए. Any question?